Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Yes, Good afternoon, sir. good afternoon. So today we will see the remaining remedy of vulnerability. तो कल हमने बराटा देखा, देन और क्या क्या देखा बोलिए। कैलकेरिया, बराटा, कलक्रिया और सारसापेरिल्ला, सारसा पेरिला और पूजा थूजा। तो ये सब मेडिसिन समझ में आए। बराटा, सारसा पेरिला, कलक्रिया, and today we will see the remaining remedies, that is the medorinum and सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि वल्नरेबल जो हम देख रहे हैं, तो इन रेमेडीज में आपको वल्नरेबल समझ में आया क्या? क्या होता है वल्नरेबिलिटी? किस तरह से ये रेमेडीज डिफेंस कर नहीं पाते और उनकी क्या डिसएबिलिटी होती है डिफेंस के लिए? तो ये सब चीजें हमने कल डिस्कस की है ना, बरेटा में किया। ओके, नाउ टुडे वी विल सी थेरिडियन, देन सर वर्नेरिएबल का मीनिंग बताइए एक बार, यस, डिस्कस कीजिए। वर्नेरिएबल का मीनिंग बताइए सर। वल्नरेबल का मीनिंग कल आप नहीं थे क्या? सर मैं लेट हो गया था। लेट हो गए थे? ओके। हाँ आपका नाम? सर, अरविंद मस्के। अच्छा, अरविंद बोल रहे हैं। अच्छा, ओके। सो वल्नरेबल दैट मीन्स बीइंग कैपेबल ऑफ बिकमिंग फिजिकली और इमोशनली wounded। जो लोग इजीली अफेक्ट होते हैं फिजिकली एंड इमोशनली, मेंटली, जिनको थोड़ा सा भी कुछ बोला तो पट से दिल को लग जाता, दे बिकम नर्वस, दे बिकम सैड, है ना। और बेसिकली ये वो रेमेडीज होती है जो डिफेंस नहीं कर पाते, जो बहुत ही टिमिड, फियरफुल, नॉन करेजियस रेमेडीज होते हैं, नॉन करेजियस कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। दे गेट इजीली हर्ट फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो दोनों फिजिकली और मेंटली अफेक्ट होने वाली रेमेडी है कलक्रिया। सो फिजिकली दैट इज थूजा एंड सारसापेरिला। तो ये होता है वर्नेरेबल। ओके, नाउ टुडे वी विल सी द थेरिडियन, मेडोरिनम। तो थेरिडियन, से इसे ससेप्टिबल सेंसिटिव भी बोल सकते हैं ना, वही है यस ना? यस, सेंसिटिव फिजिकली एंड मेंटली, ससेप्टिबल आल्सो। susceptible also, yes. So थेरिडियन, थेरिडियन रेमेडी किस किसने पढ़ी आज तक, किस किसने इसे यूज किया और कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस में ये रेमेडी यूज किया,
किस तरह के डिजीजेस में आपने ये रेमेडी यूज किया कि अभी तक चांस ही नहीं मिला यूज करने के लिए। बहुत अच्छी रेमेडी है थेरिडियोन। इट इज लाइक अ टेरेंटुला, क्योंकि टेरेंटुला भी स्पाइडर से ही बनी हुई है और थेरिडियोन भी स्पाइडर से ही है, बट टेरेंटुला एक अलग स्पाइडर है और थेरिडियोन एक अलग स्पाइडर है। आप देख रहे होंगे पिक्चर में, ये थेरिडियोन का स्पाइडर है जिसके बॉडी पे 3 लाइंस होते हैं, 3 डॉट्स होते हैं ऑरेंज कलर के। तो ये इसकी पहचान है। ओके, सो दिस इज वेरी मच पॉइजनस स्पाइडर। यस, सो थेरिडियोन, when there is huge noise, when there is huge noise penetrates the teeth, the bones, the structure of the body feels fragile, hence feels fragile because of noise. That means this remedy is very much sensitive to noise. हम कभी कभी ये बहुत बार मतलब पेशेंट से सुनते हैं, बहुत से पेशेंट इस टाइप की अजीबोगरीब कंप्लेंट करते हैं कि मुझे आवाज बिल्कुल सहन नहीं होता, पर्टिकुलरली द लाउड नॉइस, ह्यूज नॉइस लाइक अ ड्रम, है ना, डीजे, इन जो बास साउंड होता है, तो इस साउंड से मेरे शरीर में, बॉडी में ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे ये जो साउंड है इसके वेव्स है मेरे बॉडी में पेनिट्रेट कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, टिश्यूज में जा रहे हैं। तो मेरे टीथ में, मेरे बोन्स में ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं। आई फील दैट tingling like sensation in my teeth, in my muscles, in my tissues, in my bones, etc. और बहुत बार आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कोई कोई पर्सन्स थोड़ा सा भी नॉइस हो गया या फिर टिपिकल कोई म्यूजिक सुन लिया, जैसे कि रिंगिंग बेल्स, जो टेम्पल में बेल्स होते हैं उसका आवाज, या फिर पर्टिकुलर कोई स्पिरिचुअस रिलीजियस साउंड या फिर सॉन्ग या फिर नॉइस अगर वो सुनते हैं तो उनमें एक अलग सा वाइब्रेशंस बॉडी में तैयार हो जाते हैं एंड दे गोज इनटू द ट्रांस कंडीशन। दिस इज थेरिडियन, दिस इज लाइक अ हिस्टेरिकल, कि थोड़े से भी आवाज से उनके बॉडी में कंपन, झुंझुनाट होना शुरू हो जाता है। सो व्हेन देयर इज अ ह्यूज नॉइस, नॉइस पेनिट्रेट्स द टीथ, द बोन्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी feels fragile. So that's why he is a fragile remedy, and that's makes it vulnerable. Okay, so noises seems to strike on painful spots over the body. Yes, strikes on painful spot. ऐसे साउंड अगर आ रहा है, कहीं से नॉइस आ रहा है, तो उनके बॉडी में ऐसा लगता है कि वो उसे पेनिट्रेट कर रहा है, उसके बॉडी में जा रहा है, या फिर वो फील करता है कि यार ये इससे मेरे बॉडी में यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं उस टाइप के मसल्स में ट्विचिंग होना शुरू हो जाता है। सो नॉइसेस seems to strike on painful spot of the bodies, rachitis, caries, necrosis, the special actions on bones, restless, finds pleasure in nothing, very much restless like a tarantula. tarantula के एक्शंस ऐसे, मतलब उसकी जो एक्टिविटी होती है, उसका जो रेस्टलेसनेस होता है वो मीनिंगलेस होता है। उसी टाइप से थेरोडियन इज आल्सो वेरी मच रेस्टलेस एंड फाइंड्स प्लेजर इन नथिंग। किसी भी चीज में उसे मजा नहीं आता, और इतना रेस्टलेस, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाने के बाद अरे यार यहाँ मजा नहीं आ रहा, चलो और कहीं जाते हैं, वहां जाएगा और बोलेगा नहीं यहाँ मजा नहीं आ रहा, चलो और कहीं जाते हैं। थेरोडियन के साथ अगर आप कभी होटल में जाते हैं तो आपको 4-5 होटल चेंज करने पड़ेंगे। दिस इज थेरिडियन। सो रेस्टलेस, फाइंड्स प्लेजर इन नथिंग, टाइम पासेस टू क्विकली,
और इस वजह से उसका रेस्टलेसनेस और बढ़ जाता है कि चलो बहुत देर होगी, चलो फटाफट टाइम जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, चलो फास्ट से यहाँ से वहां जाते, वहां से वहां जाते, वहां से वहां जाते, लाइक दिस इज द रेस्टलेसनेस। किसी भी चीज में उसे मजा नहीं आता है, आनंद नहीं आता है। when the best remedy fails to act, especially in caries and necrosis, particularly in the avascular necrosis के पेशेंट्स में, अगर आपको बहुत सारे मेडिसिन देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, बोन कैरीज है, नेक्रोसिस है, तो ऐसे केसेस में लास्ट में आप थेरोडियन दो, 100% वहां रिजल्ट आएगा। दिस इज द थेरोडियन, द स्पेशल एक्शन ऑन बोन्स, नेक्रोसिस एंड कैरीज। यस, थेरोडियन प्रूव्स बाय हेरिंग। यस, डॉक्टर हेरिंग ने इसे प्रूव किया है फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्पाइडर। It is very poisonous. It produces a highly sensitive nervous condition with weakness. Very much sensitive patient is Theridion, particularly for noise and having tremendous weakness. Trembling, coldness, anxiety, faintness, and easily excited cold sweat is the Theridion. थोड़ा सा भी आवाज अगर उन्होंने सुन लिया, दे पर्स्पिरेट, पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, दे फील वीक, दे फील फेंट, कि इसे जल्दी से स्टॉप करो, मुझे घबराहट हो रही है ना, मुझे चक्कर आ रहा है। वर्टाइगो इज कॉज्ड बाय नॉइस आल्सो। दिस इज थेरिडियन। सो कीनोट सिम्टम ऑफ थेरिडियन, एक्सट्रीम सेंसिटिव टू नॉइस एंड एग्रेवेशन बाय क्लोजिंग आईज। ये पेशेंट, अगर थेरिडियन आपको कंफर्म करना है, अगर आपकी मेडिसिन थेरिडियन आती है रेपर्टाइजेशन में और आपको उसे देना है, तो एक कंफर्मेटरी पॉइंट है उसका कि पेशेंट को बोलो कि आप क्लोज करके 2-3 स्टेप चल के दिखा। दे कैन नॉट वॉक बिकॉज ऑफ क्लोजिंग आईज एग्रेवेट, they feel vertigo, they feel fainting, they feel imbalance. This is theridion. Yes, very much talkative and hilarity. ये सिंपली टॉक नहीं करता, इतना एक्साइट होगा, इतना वाइवेशियसली फिर बात करेगा, उसके हाथ भी चलने लगेंगे, पूरी बॉडी उसके एक्सप्रेशंस देने लगेंगे। दिस इज द टॉकेटिवनेस एंड हाइलैरिटी। एक्सट्रीम लेवल तक उसकी टॉकेसिटी बढ़ जाती है और उसके एक्सप्रेशंस बढ़ जाते हैं। देन वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ वल्नरेबल हाइपर एक्टिविटी। Hyperactivity gives feeling or excess feeling in sex, that is sexuality, colors, music, dancing, and high energy. So music, dancing, high energy, restlessness, these all are the symptoms of spider remedies. So fear of being trapped, ये एक टाइप का डिल्यूजन थेरोडियन को होता है कि कोई मुझे ट्रैप कर रहा है, कोई मुझे मेरे पे ध्यान रख रहा है, लाइक दिस। सो दिस इज बीइंग ऑफ ट्रैप, caught and of being killed. This is the fear of theridion. Then theridion often compared with tuberculinum. Yes, it is compared with tarantula, it is compared with tuberculinum. Tuberculinum is also the restless remedy, talkative remedy, very fast remedy, like a theridion. So tuberculinum children, because of this intense restlessness, तो ट्यूबरक्यूलिनम और थेरिडियन में एक जो कॉमन सिम्टम होता है, दैट इज द रेस्टलेसनेस। दे आर वेरी फास्ट, दे लाइक्स द म्यूजिक, बट थेरिडियन इज sensitive to loud noises. They like music, like dancing, but theridion aggravated by loud music. Theridion
वुमन पर्टिकुलरली, हमने थेरेडॉन चिल्ड्रन का देखा, नाउ थेरेडॉन वुमन। थेरेडॉन एक टिपिकल टाइप की वुमन होती है, जैसे कि बहुत बार हम लोग समाज में देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ ऐसे लेडीज होते हैं जो अकेले खुद को बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। दे वांट अ मेट। सो उनको ऐसा लगता है कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मेरा भी कोई पार्टनर होना चाहिए, मेरे भी साथ भी कोई ना कोई आदमी होना चाहिए। दे फील वेरी इनसिक्योर। सो इस टाइप की थेरेडियन लेडी होती है, seems to be the need to find a mate because she feels that if she does not have a mate, she will have to face the danger of the outside. इसीलिए उसे किसी पार्टनर की जरूरत होती है और वो ऑलवेज इस सर्च में होती है कि कोई तो मिल जाए, है ना। और हम हर बार वो किसी ना किसी से अप्रोच होती रहती है। सो which is too threatening, so there is a need to be attractive and a lot of hectic activity to find, attract and keep her mate. This is the Herodion lady, woman. Yes. Then confusion of mind. Herodian remedy is very much confused. Confused for identity. Confused for having duality sensation, duality feeling, sense, duality sense of head separated from mind, head separated from mind. अगर थेराडियन को थेरेडियन रेमेडीज के पेशेंट को अगर आप बोलेंगे कि आप मुझे एक चीज कंपेयर करके बताओ, ब्रेन और माइंड, they become confused. They never distinguish these two things. So they become very much confused. वो ब्रेन और माइंड को कभी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. So head separated from mind, as if, yes. So startled by the least things, startled by the least things, fruitless activities like a tarantula. Very jealous, he seems. The head is internally hot and heavy because of confusion, because of hyperactive, because of the talkativeness. Head feels hot and heavy. Very chilly patient, craving for oranges and bananas. तो इस पेशेंट को ऑरेंजेस और बनाना क्यों डिजायर होती है? तो ये जो स्पाइडर है, पर्टिकुलरली स्पेशली बनानास और ऑरेंजेस के ट्रीज पे ही मिलते हैं, इसीलिए उस ये ऑरेंजेस के ट्री पे रहने की वजह से उसके बॉडी के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं ऑरेंज कलर के. यस, एंड दैट्स व्हाई थेरिडियन लाइक्स द ऑरेंजेस एंड बनाना. यस. Rubrics covered by Theridion. Delusion double of being. Delusion double of being. Delusion head belongs to another because of confusion in head and mind. Then delusion separated from body. अब देखो, delusion head belongs to another. इस rubric के 2 मीनिंग है. हम ये रूब्रिक कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? एक वो पर्सन जिनको ऐसा लगता है कि मेरे माइंड का तो कोई यूज ही नहीं है, मुझे तो हर बात इनके माइंड से ही चलनी पड़ती है, ये जैसा कहेंगे वैसा ही मुझे सुनना पड़ता है, वैसा ही करना पड़ता है, नो यूज ऑफ माय माइंड. तब हम ये डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर ले सकते हैं. देन जहां पे हेड
और माइंड में कंफ्यूजन है, हेड और माइंड उनको समझ में ही नहीं आता, कंफ्यूजन है, वहां पर हम ये ब्रिक ले सकते हैं, डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर। यस, उनको ऐसा लगता है कि हेड अलग है, माइंड अलग है, ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। यस, सो delusion head belongs to another, then delusion separated from body is head. Head is separated from body, head अलग है, body अलग है। Okay, then fear noise from loquacity, business, loquacity excited, very much talkative, his loquacity is very much excited loquacity, hilarity, yes, and particularly about the business. Sensitive, oversensitive to noise, slightest, sensitive, oversensitive, shrill sounds too, sensitive, oversensitive, striking of clocks, ringing of bells, etc. So this is the sensitivity of Theridion, particularly for noise. किसी भी टाइप का आवाज, ये पेशेंट उस आवाज के लिए सेंसिटिव होता है, and he is very much startled from the noise. Simple एक टोन भी बेल का बजने दो, they become strict. This is the Theridion. Yes, startled from noise. So this is Theridion. तो Theridion में हमने Theridion के मेन कीनोट सिम्टम्स देखे, देन Theridion की चिल्ड्रंस देखे, Theridion की लेडी देखी, Theridion के माइंड एंड बॉडी सिम्टम्स देखे। Theridion is very chilly, desire for oranges and banana, and have Theridion के हमने पूरे rubrics भी देखे जिसको Theridion कवर करता है। ठीक, now the Kalkriya. Kalkriya again is a vulnerable remedy because Kalkriya is very much timid, having apprehension, anticipation, and because of lack of courage to fight or defend himself, they comes under the vulnerable remedy. So Kalkriya's need हमने देखी है, Kalkriya's need is having shelter. Yes. So Dr. Hahnemann's genius remedy is Kalkriya. Hahnemann's genius remedy. The sinking sensation. Sinking sensation. Sinking sensation में 3 रेमेडीज आते हैं, सल्फर, लाइको एंड Kalkriya. So common to all 3 remedies is most marked with sulfur at 11 a.m., with lycopodium at 4 p.m. and with Kalkriya at any time. This is the sinking. Kalkriya का correspond to persons of soft fiber with tendency to be fat. Yes. बहुत से पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि हम खाना बहुत कम खाते हैं लेकिन वजन बढ़ते ही जा रहा है. This is the type of Kalkriya constitution. This remedy is particularly adapted to the real leukophlegmatic constitution. So what is leukophlegmatic constitutions? Having a dropsical habit of body with a white bloated skin. Dropsical. इनके बॉडी में वाटर जल्दी एक्यूमुलेट होता है, एब्सॉर्ब होता है, सो बॉडी बिकम ओबेस, फैट डिपोजिशन बहुत जल्दी होता है. दिस इज कॉल्ड द ल्यूकोप्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. यस, next is soreness. Soreness of Kalkriya. Soreness particularly in the perspiration.
in the taste of the mouth. So soreness is one of the characteristic symptom of calcarea. The body is sore, taste is sore, sore stool and sore urine. So all discharges of body is sore. Saliva is sore. So all the symptoms are made worse by taking cold. Very much sensitive to cold. And the contradictory symptom of calcarea ameliorated by cold also. Yes. So an overwhelmed mental and physical state due to overwork or worry, anxiety, overwhelmed feeling, है ना, कि माइंड जाम हो गया, हैंग हो गया. These are the words of calcarea. अब मेरा माइंड नहीं चल रहा है ना, बहुत हो गया, like this. So this is calcarea. Worries about all their responsibilities and duties. He is very much worried about the responsibility and work, daily core work. ये भी इनके लिए बहुत प्रेशरदायी होता है कि जो डेली वो जो काम उनको करना होता है, वो काम का भी प्रेशर उनसे सहन नहीं होता है. They become overwhelmed. They sense the responsibility because of this incapability. So averse to work or exertion, apprehensive, melancholic, or doubting moods. Yes, very much doubting because of confusion, because of fear, because of worry and anxiety. This is calcarea. Calcarea is very much forgetful, confused, misplaced words and expresses himself wrongly. आप calcarea को कोई क्वेश्चन पूछो, वो पहले तो 2 मिनट सोचेगा कि क्या जवाब दूं, फिर ऐसा जवाब देगा जो आपको भी कंफ्यूज करेगा. फिर आप उसको रिपीटेडली पूछेंगे, अच्छा अच्छा नहीं ऐसा नहीं, वो फिर वैसा, लाइक दिस. फिर बाद में 2 सेकंड बाद उसके समझ में आता है कि उसने गलत तरीके से कहा है, मतलब जो सीधे से कहना चाहिए तो उसने घुमा फिरा के कह दिया, लाइक दिस. सो दिस इज calcarea बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन ऑफ द माइंड, overwhelmed mind. Yes, so forgetfulness, confused, misplaced words and expresses himself wrongly. Fear of being observed. उसे ऐसा लगता है, हमेशा इस टाइप की फियर होती है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है. इजीली फ्राइटेड, जब उसे लगता है कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई पर्सन, वो पर्सन मेरे तरफ ही देख रहा है, एंड ही बिकम फ्राइटेड. सो fear of frightened or offended and cautious. Yes, calcarea is very much cautious, like a tuja. Fears loss of reason, fears of misery, disaster, insanity. Fear excited by reports of cruelties, then fear of misfortune, contagious diseases. Yes, he is very much worried about the health, having tremendous anxiety about health. That's why he continuously read the medical books. कुछ भी अगर हेल्थ रिलेटेड कोई टॉपिक उसे मिलता है, इवन न्यूज़पेपर में भी, तो पूरा पढ़ के रखेगा, काट के उसे संभाल के रखेगा. सो हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर calcarea एंड वेरी मच एंशियस अबाउट द हेल्थ. वो क्लिनिक में भी आएगा तो वो जो उसने कट करके रखा है कातरन, वो लेके आएगा, दिखाने को आएगा कि डॉक्टर साहब ऐसे सेम सिम्टम मेरे में, आप इसे एक बार पढ़ लो, आपको पूरा समझ में आएगा कि मुझे क्या हुआ है. दिस इज calcarea. यस. सो फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून, कंटेजियस डिजीजेस. कुछ भी अगर होता है तो सबसे पहले इनको डर कि मुझे होगा क्या. यस. देन एंजाइटी विथ पाल्पिटेशन, सिट्स एंड ब्रेक्स, टिक्स all day long.
बिकॉज ऑफ एंजाइटी, पाल्पिटेशन, एक जगह पे बैठे रहेंगे घंटों तक। बहुत से पेशेंट को आदत होती है कि पत्थर लेंगे, इधर का पत्थर उधर डालेंगे, पत्थर गिनते रहेंगे, पत्थर मारते रहेंगे, या फिर कोई स्टिक लेके उसके टुकड़े बारीक 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 करते रहेंगे। दिस इज द कल्किरिया, घंटों तक। यस, होपलेस ऑफ एवर गेटिंग वेल, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कभी अच्छा ही नहीं होऊंगा, मुझे कोई बड़ी बीमारी हुई है। सो दिस इज कल्किरिया, होपलेस ऑफ एवर गेटिंग वेल। The main feeling of Kalkriya is the need for stability and security. This is the main need of Kalkriya. Security. Calcium offers protection not only to humans in the form of bone, but also in earlier form of life in the form of shell. Yes, हमने देखा है कि सिंगल सेल एनिमल, उसे भी एक सेल होता है, कवरिंग होता है। तो ये सिंपल सेल में दिया है कि उनमें भी एक सेल होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है। उसी तरह से ह्यूमन को नेचर ने बोन्स दिए जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। यस, द एक्सप्रेशन, और बोन्स बनते हैं कलक्रिया से, यस, कैल्शियम से। सो द एक्सप्रेशन आई एम हैप्पी व्हेन एवरीबॉडी इज अराउंड मी। ऐसी अगर सिचुएशन रहती है, ऐसी अगर कंडीशन रहती है, तो कलक्रिया बहुत खुश रहता है, बहुत हैप्पी फील करता है कि घर में बहुत जने हैं, सब लोग आए हुए और सब उसके आजू बाजू में हैं। ही फील्स वेरी मच हैप्पी, cheerful. So I am happy when everybody is around me. This represent the need to have people around them for protection and security. Yes. They feel secure when the people are around them. The young men much dependent on their parents. Yes. The young men, actually young men में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना, खुद के पैर पे खड़ा होना चाहिए, अपना कमाना चाहिए। बट ऐसे कोई पर्सन्स, जो बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए, एजुकेशन ले लिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते, नो जॉब, और अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, these children are the Kalkriya children. The young men much dependent on their parents, who remain bachelor till late and then try to find a mother substitute. और इस वजह से वो कुछ कमाते नहीं, कुछ काम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई धंधा नहीं, घर में बैठे माँ बाप का पगार खा रहे हैं, माँ बाप के पैसे पे जी रहे, तो फिर उनकी शादी भी लेट होती है। तो ऐसे बच्चे आते अंडर द कल्किया। तो फिर शादी लेट हो गई तो धीरे धीरे वो अपने मदर्स की तरफ डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो हु रिमेन्स बैचलर टिल लेट एंड दे ट्राई टू फाइंड अ मदर सब्स्टिट्यूट। अब उनका पूरा मदर पे ही डिपेंडेंस हो जाता है कि मदर जैसा बोलेगी वैसा करेंगे, मदर जैसा बोलेंगे वो सुनेंगे, है ना, मदर का ही काम में हाथ बटाएंगे, लाइक दिस। सो दिस इज कल्क्रिया चाइल्ड। और ये जो होते पर्सनैलिटीज, दीज आर वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट देयर लाइफ आल्सो, अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट हिमसेल्फ आल्सो। यस, सो दिस इज द कल्क्रिया। वो कोई क्योंकि कल्क्रिया बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन वो अपने लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, and they become late to take decision for their life, for their marriage, for their job, service, etc. So they try to find a mother substitute for a wife in the cope up state. Kalkriya is a home builder. Home
represent the protective shell he needs around him. He has to cope when he has to face responsibilities. And there is no protection. They remain unmarried as long as is possible. शादी नहीं करनी. क्यों? They avoid responsibility. They cannot take responsibility. This is कलकरिया. डर लगता है शादी करने से, डर लगता है फिर उसे कौन खिलाएगा, उसे कौन, उसका कौन करेगा, लाइक दिस. सो दिस इज द वर्ड ऑफ कलकरिया. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसीलिए शादी भी नहीं करेंगे. फिर जितना है उतने में खुश, क्योंकि पेरेंट्स का शेल उसे मिल रहा है. घर है, घर, वो घर ही उसका प्रोटेक्टिव मटेरियल बन जाता है और वो अकेले रहना पसंद करता है. दिस इज कलक्रिया. आप देखो अनमैरिड रूब्रिक में आपको कलक्रिया मिलेगा. यस, तो ये उसके पीछे का थिंकिंग होता है. When all attempt to seek protection fail, they become indifferent. देखो, जब कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कलक्रिया के साथ कि उनका प्रोटेक्शन चले गया है ना, अभी तक पेरेंट्स पे डिपेंड थे, पेरेंट्स का जो भी पेंशन पैसा मिल रहा था उसमें वो खुश थे, उसमें ही वो जी रहे थे. लेकिन पेरेंट्स अगर जाते हैं, पेरेंट्स निकल जाते हैं, तो अब तो खाने के भी लाले पड़ेंगे. फिर अब तो ऐसे कंडीशन में दे बिकम इनडिफरेंट. और ये इंडिफरेंट, उनका इंडिफरेंटनेस कैसे होता है? दिस इज सिपिलिटिक कंडीशन. अभी तक तो वो साइकोटिक थे, नाउ दे टर्न इनटू द सिपिलिटिक. और ये जो सिपिलिटिक उनका होता है, इट इज लाइक अ स्ट्रेमोनियम. जिस तरह से स्ट्रेमोनियम बिकम ओवर, मतलब फियर ओवर पावरिंग, उसी तरह से कलक्रिया में होता है. तो वो कैसा? तो सिट्स एंड ब्रेक पिंस द होल डे, indifferent about recovery also. So when the life situation of Kalkriya person changes and he loses the security of his home, of his parent, he feels as if left alone in the wilderness, thus going into stramonium state, that is trance, which is that of an unprotected person out in the dark night wanting to come home. This is Kalkriya. जो फियर होती है अलोननेस की, अब मैं कैसे जीऊंगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा कोई नहीं है, अब मेरा कोई शेल्टर नहीं है, अब मेरा कोई प्रोटेक्टर नहीं है, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा. दिस इज द सिपिलिटिक स्टेज of Kalkriya, and he goes into the indifferent state of mind, like a trance. फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या करूं क्या नहीं, कंप्लीटली एक जगह पे बैठे रहेगा. दिस इज द सिपिलिटिक स्टेट ऑफ Kalkriya, become indifferent. It is a long and deep acting remedy, mainly an antisoric remedy. Yes, Kalkriya, it is an antisoric remedy and acts from infancy to old age, child to old age. Desire to be magnetized, strong desire for sweets, salt and soft-boiled eggs, local perspiration, especially head and neck, sore and profuse, perspires easily on slight exertion, is Kalkriya. Rubrics covered by Kalkriya: anticipation, dentist, physician before going to. They are very much anticipating fear before going to examination.
fear of physician also. So anxiety, cruelties after hearing, delusion, confusion, others will observe her. Delusion, murder, sees someone. Delusion, smaller of being. Fear dogs off, fear ghost off. Horrible things, sad stories affected her profoundly, and magnet is desired to be. These are the rubrics. Now the medorinum. मेडोरिनम बहुत से होम्योपैथ्स बहुत ब्लाइंडली यूज करते हैं फॉर जो साइकोटिक माइजम के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये एक नोजोड करके कोई 30 पोटेंसी में, कोई 200 पोटेंसी में, कोई लोग 1 पोटेंसी में इसे सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले यूज करते हैं 1 डोज में, बट इट इज नॉट अ राइट प्रोसेस. Medorinum is one of the most important nosode. Medorinum, when used in high potency, 10 m, 50 m, gives the best result. The indication for psychotic or syphilis is in the time aggravation. Yes. So psychotic medorinum and syphilitic medorinum. तो psychotic medorinum कब हमें चूज करना है और सिफिलिटिक मेडोरिनम कब चूज करना है? तो साइकोटिक मेडोरिनम में ये जो डिफरेंस है ये पर्टिकुलरली वी कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय देयर एग्रीवेटिंग फैक्टर, aggravating time. So in syphilis, medorinum has aggravation from sunset to sunrise. The whole night aggravation is medorinum, like a mercury. Then, as also the great anti-syphilitic remedies is medorinum. देखो ये एंटीसाइकोटिक भी है एज वेल एज एंटीसिफिलिटिक भी है, लाइक मर्क्यूरी. मर्क्यूरी भी साइकोसिफिलिटिक है, मेडोरिनम भी साइकोसिफिलिटिक है. देन इन साइकोसिस मेडोरिनम हैज एग्रेवेशन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, होल डे, always brighter evening में ज्यादा, in the early morning hours. Yes, so this is medorinum. So psychotic and syphilis. Intense nervous sensibility, intense nervous sensibility, especially to touch of garments. तो उनको कपड़ों का टच भी सहन नहीं होता है. आप इमेजिन करो जिनको गनोरिया है, और गनोरिया के पेशेंट आपने अगर कभी देखे होंगे, गनोरिया के पेशेंट दे कम विथ लुंगी, उनको टाइट कपड़े बिल्कुल सहन नहीं होते, कपड़ों का टच भी सहन नहीं होता. दे वियर अ लूज लुंगी एंड कम इनटू द क्लिनिक. यस, एंड कंटिन्यूअस ड्रॉपिंग ऑफ पस फ्रॉम यूरेथ्रा. सो दिस इज typically a medorinum patient. Yes. So intense nervous sensibility, especially to touch of garments. Sensibility is exalted almost to the clairvoyance. Sensitivity इतनी exaggerated होती है, they become clairvoyant. So this is the sorosyphilitic stage of medorinum. जब वो just infective stage में होते हैं, they have a sensitivity. The urethra have a sensitivity to touch a clot. Yes, and after when inflammation vanishes and pus formation start हो जाता है, then they become a psychosyphilitic. Yes, so when they goes into the syphilitic condition, their clairvoyance increases. There is a great sensitiveness to drop of air, very much sensitive to cold air, takes cold easily. At the same time, there is
great desire to be fanned. इतना कोल्डनेस के लिए, इतना सेंसिटिव होने के बाद भी दे वांट अ फैन. So in they aggravate or sensitive in the sun also, by warmth of bed also, entering a warm room, they get a cough. Yes. जैसे ही warm room में enter करते, they start coughing. Offensive odor of body, especially children and women. एक typical smell. छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कि एक टिपिकल स्मेल उनका आता है. सो offensive odor of the body, especially children and women, is Medorina. डॉक्टर बर्नेट, देखो डॉक्टर बर्नेट में कुछ कंडीशंस मेडोनिनम के देखे हैं, जो कंडीशंस पेशेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किए और उनमें मेडोनिनम से बहुत अच्छे एक्सलेंट रिजल्ट मिले. बट हर पेशेंट में एक हिस्ट्री उनको मिली, दैट इज द सप्रेस्ड गनोरिया. तो इन पेशेंट में उन्होंने जहां जहां उनको सप्रेस गनोरिया की हिस्ट्री मिली, वहां पे उन्होंने मेडोनिनम हाई पोटेंसी 1 डोज दिया एंड दे गेट अ सरप्राइजिंग रिजल्ट. तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं. अ पेशेंट हु हैड फिट्स एट एवरी मेंस्ट्रुअल पीरियड. जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता था, दे गेट अ कन्वर्जेंस. दैट लेडी गेट अ कन्वर्जेंस. Her the fit becoming on in the early morning, and that patient cured by Medorina. A man who had clonic spasm, the legs suddenly shot up from the bed. ये क्लोनिक स्पाज्म बहुत से लोगों का आते हैं. हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसे कहते हैं कि पैरों में, काप मसल्स में बेंड की आती है ना. बेंड की बोलते हैं उसको, कि एकदम टॉन, मसल्स टॉन हो जाती है ना, एकदम टाइट हो जाती है और फिर अचानक ये हो जाता है. दिस इज स्पाज्म. ये सडनली होता है और फिर उनको उठ के बैठना पड़ता है और सीवियर पेन वहां पे होता है. सो दिस इज कवर्ड बाय मेडोरिना. इफ दैट पेशेंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ सप्रेस्ड गनोरिया. अ केस ऑफ right wrist rheumatism cured by medorinum. Polyp having their origin in a chronic suppurative discharge. He regards medorinum as the mother of pus and catarrh. So polyp having pus discharge and that patient having the history of suppressed gonorrhea, cured by medorinum single dose in high potency. Then masturbation in children, albuminuria when the urine contains some mucus, psychotic asthma aggravated 2 to 4 a.m., psoriasis palmaris, fiery red rash. देखो ये बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन ये टिपिकल कंडीशन कवर्ड बाय मेडोरिना. व्हाई? फायरी रेड रैश डेवलपिंग अबाउट द एनस. बहुत से बच्चों में, जिसे हम रैपी रैश कहते हैं, नैपी रैश कहते हैं, है ना. और आफ्टर द लूज मोशंस, दैट एनल पार्ट बिकम वेरी मच रेड, having itching, having some discharge, moist discharge. So fiery red rash developing about the anus in babies, a few days old babies. Constipation with hard, dry stool. When the nurses say baby's water scarred, है ना, धोने से भी, ठंडे पानी से या फिर गर्म पानी से धोने से भी वो बढ़ते जा रहा है और भी उसे तकलीफ होती है. जैसे ही पानी लगा, बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है. इट टेरिबली scars it terribly, the indication for medorinum.
क्लियर। यस, सो ये डॉक्टर बर्नेट ने कुछ बहुत ही एक्सलेंट एग्जाम्पल दिए, मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपको बताना चाहा। ओके, द फीलिंग ऑफ incapacity in medullum is represented by anxiety of conscience. Yes, medullum patient is anxiety of conscience, having anxiety of conscience, as if he were guilty of a crime. जब गनोरिया स्टार्ट हो जाता है तब इस बात का एहसास होता है कि मैंने गलत किया, he feel guilty, और उसका नतीजा अभी मैं भुगत रहा। सो दिस इज द मेडोरिना। ऑन द अदर हैंड, देखो एक बार उसे ये गिल्ट फील भी होता है बिकॉज ऑफ एंजाइटी कंसाइंशियस, वो खुद को एक, मैंने मेरे हाथ से बहुत बड़ा क्राइम हो गया, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा पाप हो गया, ऐसा उसे महसूस होता है। And on the other hand, in order to cover up his inner weakness, जो डर उसके मन में आ रहा है, जो चीज का डर उसे सता रहा है कि मैंने गलत किया, मैंने ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, मेरे से गलती हो गई, और उस गलती को छुपाने के लिए बिकॉज ऑफ द इनर वीकनेस, the medullum patient can take the opposite stance, in that he can become quite egoistic, critical, rude, selfish, insensitive, extravagant, and can act as if nothing really scares. इस टाइप को दिखाएगा। दिस इज साइकोटिक मेडोरिना। जब बस प्योर एलोइश होता है, नॉन, मतलब वहां की सेंसिबिलिटी चली जाती है, एंड आफ्टर दैट पेनलेस पस हो जाता है, पस आता है लेकिन पेन नहीं होता है। दिस इज प्योर साइकोटिक। सो कैन एक्ट एज इफ नथिंग रियली स्केयर्स, बॉदर्स और अफेक्ट्स हिम। He may speak abruptly and use very little weight. This is the Medullum. जब sensitivity होती है, then he becomes anxiety conscientious. Sensitivity चली गई, when he enters into psychosis, then he becomes very strong, very egoistic. This is Medullum. Very much hurried. Time passes too slowly. Always rushing on and anticipating. Yes. तो हमने थेरिडियन देखा जो, जिसमें टाइम पासेस क्विकली था, और यहाँ पे टाइम पासेस स्लोली। Always rushing on, anticipation or anticipating. Yes. So everything seems unreal, as if in a dream. हर चीज उसे अनरियल लगती है, जैसा वो कोई सपना देख रहा है। कंफ्यूजन एज टू हिज आइडेंटिटी, पैसियोनेट, मैनियाकल, वाइल्ड, स्ट्रॉन्ग सेक्स ड्राइव। यस, सो ही फील्स हिमसेल्फ अ वेरी सेक्सी मैन। दिस इज द मेडोरिना। स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल ड्राइव, shuns responsibility like Calcria, can be chilly or warm. Yes, Medullum, it is a like a ambithermal. वो chilly भी होता है, warm भी होता है, tend to warm side, but towards the hot patient, craving for fresh air, strong desire for sweets, sour, spicy, and salt. Rubrics. Medullum covers elements from anticipation,
sensitive refinements to fear, misfortune of anxiety, time is set before. Yes, anxiety, time is set before. Time passes too slowly, appears longer. बहुत बोर होता है ये पेशेंट को कि ये कब बैठेगा, है ना। 2 दिन का वो, उससे ऐसा लगता है कि महीने भरे से वो ये चीज सहन कर रहा है, लाइक दिस। सो वॉशिंग ऑलवेज हर हैंड, egotic, self-esteem, anxiety of conscience as if guilty of a crime, delusion that someone is behind him. Delusion, animals, persons are, rats, mice, yes, वो उसे ह्यूमंस एनिमल्स के जैसे दिखते हैं, पर्सन्स एनिमल के जैसे दिखते हैं। डिल्यूजन्स, फेशेस, whenever he turns his eyes, yes, delusion, faces, multiple faces, different faces उसे दिखते हैं जब वो आईज क्लोज करता है या फिर टर्न करता है। डिल्यूजन, इंसेन शी विल बिकम, यस, डिल्यूजन, परस्यूड ही was, delusions, rats, sees running across the chair, across the room. Delusion, strange familiar things seen. Delusion, unreal everything seen. Delusions, walk behind him someone. जो पेशेंट बार बार ये कंप्लेंट करते हैं कि मुझे कहीं पे भी जाओ ना तो ऐसा लगता है कि ये रियल है ही नहीं, मुझे वो हर चीज ऐसे अनरियल लगती है। सोच लो कि मे बी द मेडोरिना, अगर वहां पे गोनोरियल कुछ सप्रेशन की हिस्ट्री मिलती है तो आप उसे मेडोरिनम दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ मेडोरिनम। आज हमने थेरिडियन, मेडोरिनम एंड थर्ड रेमेडी इज, बोलो सो गए क्या? कैलकेरिया सर। कैलक्रिया, वेरी नाइस। सो ये थे वर्नियरेबल रेमेडीज। हम कल से कुछ नया टॉपिक देखेंगे। बेसिकली वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशंस। तो ये 31 मार्च तक हमारे सेशंस चलेंगे। उसके बाद नया क्या शुरू करने का, इसके लिए मुझे आप लोगों के कुछ सजेशंस चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सेशंस और भी आगे चलते रहे तो कुछ सजेशंस दो कि आगे हमने ये अभी कंप्लीट होते आ रहा है तो आगे अप्रैल से हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। ओके, तो मैं आपके सजेशंस की राह देखूंगा। आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे, या फिर ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, या फिर यहाँ पर भी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, तो ये 1 ईयर का जर्नी का हमारा अभी लास्ट पड़ाव है। ओके, यस, तो आप लोगों को ये जो हमने 1 साल तक हमने जो सेशंस लिए कॉन्फ्लिक्ट पे, कैसे लगे? ओके, जो भी अभी कुछ थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट बचे हैं, हम आने वाले डेज में उसे कवर कर लेंगे। जो जो याद आते हैं वो मैं बताऊंगा। ओके, और आपके फीडबैक्स मुझे चाहिए, कैसे लगा, कैसे सेशंस रहे, आप लोगों ने क्या क्या सीखा। ओके, अगर आप चाहते होंगे तो आप इस पे एक आधी एग्जाम भी ले सकते हैं। ओके, सो अनम्यूट करके अगर किसी को कुछ कहना है, बोलना है तो बोल सकते हैं। सर बहुत अच्छी जर्नी रही 1 ईयर की रेगुलर स्टडी वाली। थैंक यू। एटलीस्ट और कॉन्फ्लिक्ट समझ में आए बेसिकली। हम्म। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो बेसिकली मतलब किसी भी डिसीज में कैसे कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है डायरेक्टली हम लोग ये देख सकते हैं, समझ में आया। थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलो, और
और किसी को कुछ कहना है? नहीं कोई कहना होगा तो हम क्विट करते हैं। ओके, चलो, ओके, थैंक यू, चलो बाय बाय, सी यू। थैंक यू सर। यस, थैंक यू।